सो वर्क एनर्जी एंड पावर आज हम लोग को स्टार्ट करना था. So work is said to be done only when a body moves under the influence of a force. So if there is no displacement of the body, even when a force acts on it, the work done is said to be zero. तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना. और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, है ना. तो अगर कभी भी जब भी आप फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम वहां पे वर्क डन जीरो बोलेंगे उस केस में. So even if we are applying some force and if there is no displacement happening, then we will say that the work done is equal to zero. So work done क्या है? Force into displacement, ठीक है? And if displacement is equal to zero, then work done will also become zero. So this is what means from this statement. Now, so definition of work. Work is said to be done only when the force applied on the body makes the body move. So that is, there is a displacement of the body. Now, measurement of work. So the amount of work done by a force is equal to product of the force and the displacement of the point of application of force in the direction of force. ये बड़ा important है, in the direction of force. मतलब कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, और अगर जिधर फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसी के अलोंग होता है ना. ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ गया लेट से, तो बिकॉज जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. So you should, this is very important that the displacement should be along the direction of force or force should be along the direction of displacement. अगर किसी और डायरेक्शन में होगा तब कुछ और होगा, है ना. एफ डी कॉस थीटा हो जाता, वो अभी हम लोग नीचे देखेंगे. So if a force acts on a body and does not move, that is displacement is zero, then no work is done. So अगर हम फोर्स लगा रहे हैं and the body is not moving, then in that case displacement is zero, और तब हम कहते हैं कि no work is being done. नाउ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब देखो इसमें एक कैच है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, बट अगर आप देखो एक्चुअली में तो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो वर्क डन को भी वेक्टर होना चाहिए था, बट अब तुम लोग सीनियर क्लास में देखोगे कि ये दो तरीके का प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर के बीच में. एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है. तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है. इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डॉट प्रोडक्ट से रिप्लेस करते हैं, इसको डिपिक्ट करते हैं, और इसीलिए वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी होता है डॉट प्रोडक्ट की वजह से. सो वी कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स बाय द फोर्स इन टू वेज. सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क बाय द फोर्स इन टू वेज. पहला कि हम लोग जो फोर्स है उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें. मतलब बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देखो यहां पे क्या है कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देयर इज सम एंगल बिटवीन देम, राइट. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग ये पूरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां एस है. तो इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट लेना है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. हम लोगों ने देखा था अगर ये थीटा है तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ये क्या है? ए बी क्या है? बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेनस है इस एंगल के लिए. तो ए बी बाय ए सी इज कॉस थीटा. कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस हो गया. सो यहाँ पे बेस है ए बी हमारा, राइट. सो ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू कॉस थीटा. ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट है विच इज एस cos theta, right. So AB is equal to S cos theta.
ओके, सो अब हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट जो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसका एक कंपोनेंट ले रहे हैं फोर्स के डायरेक्शन में। मतलब फोर्स इधर था, उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर एस डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो, जब ये यहां से यहां पहुंच गया तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो एस कॉस थीटा है। सो एस कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इनटू फोर्स कर देंगे तो वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन यहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, दैट इज एस कॉस थीटा। सो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये वर्क डन है। So force into displacement into cos theta, मतलब work done is force into displacement into cosine of the angle between force and displacement. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So work is equal to force into component of displacement in the direction of force. सेकंड है कि दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग जो फोर्स है उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग निकाल लेते हैं। मतलब कि देखो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम लोग उसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकालते हैं। मतलब आप ये सोचो फोर्स इधर है, हम लोग को फोर्स इसके अलोंग निकालना है, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो, इसका कंपोनेंट इधर निकालना है। तो ये अगर ये हमारा फोर्स है तो हमें पता है, मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी ले लें, राइट? तो ये ए बी अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस हो गया और ए सी जो है बेस हो गया। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ ए सी बाय ए बी। सो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी। तो फोर्स का कंपोनेंट जो इसके अलोंग है ना, फोर्स अलोंग ए सी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सो यही चीज यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो वर्क डन है, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। वहां डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स इनटू एफ था, यहाँ पे फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा। सो ये वर्क डन यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो गया। एक में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग लिया, दूसरे में फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लिया। Now, from equation above, it is clear that work done is equal to product of magnitude of force, displacement and cosine of the angle between the force and displacement. Means जब हम कह रहे हैं work done, general क्या होगा, force into displacement into cos of the angle between force and displacement. Means if force is acting in this direction, displacement is acting in this direction, and there is an angle theta between them. So work done will be force into displacement into cos of angle between force and displacement. Now since force F and displacement S are vector quantities and work W is scalar quantity, so work is expressed as the dot product of force and displacement vectors. The dot product of two vectors is a scalar, वही हम जो बात कर रहे थे। तो work done is written as F dot S, scalar product of two vectors, है ना? इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालो तो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नाउ केस वन, if the displacement is in the direction of force, that is theta is equal to 0 degree, then cos 0 degree is equal to 1. Hence work done is equal to force into displacement. So work done is positive, that is
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा, वर्क डन हम लोग एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। सो वर्क डन is equal to force into displacement into cos theta. Now if theta is equal to 0 degree, cos 0 degree is equal to 1 हो गया, work is equal to force into displacement into cos 0 degree. So this is force into displacement into 1. So work done is equal to 1 हो गया basically. Sorry, force into displacement हो गया. Now example, so work done is positive in this case है ना, जब theta 0 degree है. Example, in free fall of a body of mass m under gravity through a height h. तो अगर एक बॉडी नीचे गिर रहा है, इसमें फोर्स mg नीचे के तरफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है, लेट से जब ऊपर से नीचे आया, तो जब नीचे यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh. ठीक है. सेकेंड केस, इफ द डिस्प्लेसमेंट is normal to the direction of force, मतलब थीटा 90 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हमेशा 0 होगा. क्यों? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा है, राइट. सो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 90 डिग्री हो गया. कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो वर्क डन इज इक्वल टू force into displacement into 0, which is 0. So यहाँ पे work done is equal to 0. ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे 0 होगा. कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है. मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स के अलोंग तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है. वर्क डन का डेफिनेशन कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज हैपनिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Displacement is horizontal and force is acting vertical. So that's why work done in this case is 0. Clear है बच्चों? So example, when a coolie walks on a horizontal ground while carrying a load on his head, no work is done against the force of gravity because the displacement of load is normal to the direction of force of gravity. Now conditions for work done by a force to be 0. So amount of work done by a force is 0 in the following two situations. So first is when there is no displacement, and second when the displacement is normal to the direction of force. So if the displacement is in a direction opposite to the force, that is theta is equal to 180 degree, then cos 180 degree is equal to -1. That is work done is minus force into displacement s. The work done is negative. So this is usually the case when the force opposes the motion or it tries to stop a moving body. ठीक है, तो इन इस केस में cos 180 डिग्री -1 है, वर्क डन -f into s हो गया. So example, when a body moves on a surface, the force of friction between the body surface is in direction of opposite to the motion of the body. तो यहाँ पे जब थीटा 180 डिग्री होता है तो वहां पे cos 180 डिग्री माइनस हो जाएगा और वर्क डन -f into s हो गया. So work done is negative. So this is usually the case when the force opposes the motion or it tries to stop a moving body. जैसे फ्रिक्शन है,
किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन जो है इसके मोशन के ऑपोजिट लगता है. अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा. तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है. इनके बीच में जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. सो वर्क डन इज इक्वल टू, so work done is equal to force into displacement into cos of 180 degree. So this is F into S cos 180 डिग्री माइनस 1 हो गया. सो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो मैंने तुम लोगों को इनफैक्ट कॉस के सारे वैल्यूज लिखवाए भी थे. खैर तुम लोगों को तो पता ही है ना. कॉस 0 डिग्री जो है 1 है. कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2 होता है, राइट. कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो गया. सर बट फिजिक्स में तो हमारी सिर्फ वही आ रही ना, cos 0 और cos 180. कुछ और आ जाएगा तो क्या बोलोगे, हम मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े, नहीं बनाएंगे. नहीं नहीं नहीं, मैथ्स में तो पता है, बट मैं फिजिक्स का सी जनरली पूछ. क्यों नहीं पूछ सकते हैं तुमको, क्यों नहीं पूछ सकते हैं कि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये थीटा 60 डिग्री है. क्यों नहीं दे सकते हैं तुमको ऐसा. जब तुमको बता ही दिया कि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू तुमको निकालना 10th क्लास में सीखे ही हो, तो ऑब्वियसली दे कैन आस्क यू. यस सर. So when a body moves on a surface, the force of friction between the body surface is in direction opposite to the motion of the body. So therefore, work done by the force of friction is negative. Now if the force is variable, है ना, अगर force मान लो हर मोमेंट पे चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है. So if the force is variable, force varies. So if the force is variable, that is, force varies during displacement, the work is determined by plotting a force displacement graph. The force is taken on y-axis and the displacement on x-axis. So area enclosed by the sketch and the displacement axis gives the work done. तो ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसके अंदर जो एरिया ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. सो दिस इज, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्केच एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, ठीक है, गिव्स द वर्क डन. सो work done is equal to area under the force displacement graph. So work done is equal to area under force displacement graph. Thus work done by the force of gravity. Now work done by the force of gravity हम लोगों ने देखा था mgh होता है ना. अगर फोर्स mg नीचे के तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट h नीचे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन इज mgh. So work done by the force of gravity is same whether a person comes down from a certain height during the using the stairs or slope or a lift. तो मान लो कोई यहाँ से कोई आदमी स्टेयर्स के थ्रू इस डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब इतने हाइट तक नीचे आता है, या फिर यहाँ फिर से डायरेक्टली लिफ्ट के थ्रू आ जाता है, या फिर एक स्लोप है, राइट, एक स्लोप है, उस स्लोप पे आ जाता है स्लाइड करके. तो तीनों केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एच ही हो रहा है. तो इसीलिए जो वर्क डन होगा वो mgh ही होगा तीनों केस में, वेदर ही यूजेस लिफ्ट, स्टेयर्स और स्लोप. इन ऑल द थ्री केसेस द नेट डिस्प्लेसमेंट इज h. सो हम लोग वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पे mgh हो जाएगा. Now units of work
SI unit of work is joule. It is abbreviated as capital J. So 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. ठीक है, तो 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा. सो then we say that 1 joule of work is done. So 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. 1 Newton is the force and 1 meter is the displacement. So CGS unit of work is erg. Okay. So 1 erg is 1 dyne into 1 centimeter. So CGS unit of work is erg. 1 erg is equal to 1 dyne into 1 centimeter. So 1 erg of work is said to be done when a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction. So agar 1 dyne of amount of work is displacing a body by 1 centimeter, we say that 1 erg of work is done. Now अर्ग को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. ठीक है, सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. नाउ पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ठीक है, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम टेकन, पावर हो जाएगा. पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. सो दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. नाउ पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी अगेन. ठीक है, तो जैसे हम लोग वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. सो विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी. सो फोर्स इंटू वेलोसिटी, दिस इज पावर. ठीक है, so power is equal to force into velocity. The power spent, you know, so power spent by a source depends on the following two factors. One is the amount of work done by the source. Second, the time taken by the source to do the said work. Right? तो दो चीज पे पावर डिपेंड करेगा. एक तो वर्क, कितना वर्क हो रहा है, कितना वर्क डन है, और कितने टाइम में वो वर्क डन कंप्लीट हो रहा है. तो मतलब कि जब हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क, तो जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा पावर होगा, और जितने कम टाइम में हम लोग वर्क करेंगे उतना ज्यादा पावर होगा. ज्यादा टाइम लेंगे तो कम पावर होगा. द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. तो जैसे वॉट जो पावर है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब जूल्स पर सेकेंड हो गया, और इसको हम लोग 1 वॉट कहते हैं. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. सो एसआई यूनिट, so SI unit of power is what? It is abbreviated as W. So if 1 joule of work, so if 1 joule of work is done in 1 second, the power spent is said to be 1 watt. So bigger the unit of power, तो bigger units of power are kilowatt and megawatt and gigawatt. So ये सब बड़े units of power है. 1 kilowatt is 1000 watt. 1 megawatt is 10 to the power 6 watt. 1 gigawatt is 10 to the power 9 watt. Now smaller units of power are milliwatt and microwatt. Milliwatt क्या होता है? 10 to the power -3 watt. Microwatt जो होता है 10 to the power -6 watts.
The CGS unit of power is 10 to the power 7 erg per second. ये कन्वर्जन दे रखा है, CGS यूनिट तो अर्ग पर सेकेंड ही होगा, उसका वॉट में अगर कन्वर्ट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड. So CGS unit of power is erg per second. One watt is equal to 10 to the power 7 erg per second. Horsepower is another unit of power largely used in mechanical engineering. It is related to the SI unit watt as given below. 1 horsepower is 746 watt or 0.746 kilowatt. Difference between work and power. Work is तो so work done by a force is said to be product of force and displacement in the direction of force, and the power of a source is rate of doing work by it. Work done does not depend on time. Power spent depends on time in which work is done. SI unit of work is joule and SI unit of power is watt. अब एनर्जी पे आते हैं. बॉडी केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी. ओके, सो एक बॉडी कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है वो उसका एनर्जी होता है. सो अ बॉडी केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी. सो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द बॉडी कैन परफॉर्म. तो एनर्जी कितना है ये कैसे पता चलेगा? जितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा वो बॉडी, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है. अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूटिलाइज करेगा और वर्क को करेगा. व्हेन अ बॉडी डज वर्क इट्स एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक है, जो स्टोर्ड एनर्जी खर्च हो जाएगा जब वो वर्क करेगा. सो व्हेन अ बॉडी डज वर्क इट एनर्जी डिक्रीजेस. while if work is done on the body its energy increases. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. The energy of a body is its capacity to do work. So like work, energy is also a scalar quantity. So energy क्या है? So energy of a body is basically its capacity to do work. So like work, energy is also a scalar quantity. Now SI unit of energy is joules and CGS unit of energy is erg. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. Now bigger units of energy are watt hour and kilowatt hour. So watt hour and kilowatt hour are bigger units of energy. 1 watt hour is the energy spent by the source power 1 watt in 1 hour. That is 1 watt hour is equal to 1 watt into 1 hour, that is 3600 joules. Or 1 kilowatt hour is the energy spent by a source of power 1 kilowatt in 1 hour. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. तो ये conversion है basically जो आपको याद रखना है कि 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joule. So ये आता कैसे है कि 1 किलोवाट आवर, किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू आर. आर में मतलब 3600 सेकेंड्स. ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज 3600 एंड 000. सो दिस मच अमाउंट ऑफ जूल्स और 3.6 into 10 to the power 6 joules.
Heat energy is usually measured in calories. ठीक है, हीट एनर्जी को अलग से हम लोग कैलोरीज में मेजर करते हैं. 1 calorie is the energy required in raising the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius or through 1 degree Celsius. It is related to joules as 1 joule is equal to 0.24 calories or 1 calories is 4.18 joule. 1 kilocalorie is 1000 calories, 4180 joule. Now electron volt, the energy of atomic particle is very small, so it is measured in electron volt. 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Now difference between energy and power. So एनर्जी को हम लोग जो डिफाइन करेंगे, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. तो कितना उस ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी है काम करने का, वर्क करने का, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इट. सो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उतना ही वर्क कर पाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट. सो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. पावर क्या हो गया? पावर ऑफ अ सोर्स इज रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय इट, है ना. रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर. एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. ठीक है ना. जितना एनर्जी स्पेंड हुआ इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. पावर स्पेंड डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच एनर्जी इज. सो पावर डिपेंड्स ऑन टाइम in which energy is spent. SI unit of energy is joule and SI unit of power is watt. So energy of a body is capacity to do work and power of a source is rate at which energy is supplied by it. Now energy spent does not depend on time. ठीक है. जो एनर्जी हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम बट पावर डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच एनर्जी इज स्पेंड. एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज watt. Now mechanical energy and its different forms. So there are two forms of mechanical energy. One is potential energy and kinetic energy. So energy possessed by a body due to its state of rest or of motion, ठीक है, is called the mechanical energy. ठीक है. तो उसके state of rest या or of motion, उसके वजह से जो energy possessed है, that is called mechanical energy. ठीक है. So it is in two forms. One is potential energy and other is kinetic energy. The total mechanical energy of a body is equal to sum of its potential energy and kinetic energy. Potential energy को हम लोग U से represent करते हैं. Energy possessed by virtue of its change position or configuration is called potential energy. So energy जो कि उसके configuration या फिर उसके position के वजह से हो, उसको हम लोग potential energy कहते हैं किसी भी object का. और it is usually denoted by the symbol U. कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल इज a body placed at a height above the ground, a wound up watch spring, a compressed spring, a bent bow, a stressed rubber string, etc. have the potential energy. In mechanics, potential energy is mainly of potential energy is mainly of two kinds. First is gravitational potential energy due to its change position. Second is elastic potential energy due to its change configuration. Gravitational potential energy, the potential energy possessed by a body due to force of attraction of a body on it is called its gravitational potential energy. So gravitational potential energy of a body is zero when it is at infinity because the force of attraction of body
of force of attraction of earth on the body is then 0. Now at a finite distance, so at a finite distance from the earth, the gravitational potential energy of body is negative. Now elastic potential energy, when an external force is applied on the body, its configuration or shape changes. Elasticity is the property by virtue of which a body regains its original configuration on removal of the external force. The potential energy possessed by the body in the deformed state due to change in its configuration is called the elastic potential energy. Gravitational potential energy at height h. So gravitational potential energy at a height h is given as U is equal to mgh. So the gravitational potential energy of a body at a height above the ground is measured by the amount of work done in lifting it up from the ground to that height against the force of gravity. Let a body of mass m be lifted from the ground or the uh, earth surface to a vertical height h. The least upward force F required to lift the body without acceleration must be equal to that of gravity. Equal to the force of gravity. Now on the body acting downwards. So तुम अगर कोई ऑब्जेक्ट है नीचे रखा हुआ उसको किसी हाइट तक उठा के रखना है, लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, इसको अगर हम लोग को उठा के ऊपर किसी हाइट तक लेके जाना है यहाँ तक, तो आपको इस पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब मिनिमम फोर्स जो आपको लगाना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस बॉडी. मतलब आप जो फोर्स लगाओगे दैट हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू mg. Minimum force is equal to mg. So force into displacement, the force which we are applying into displacement h will be equal to the work done. So amount of work done on the body is mg into h. So this work is done in lifting the body up and it gets stored in the body in the form of a gravitational potential energy. So gravitational potential energy U is equal to mgh. So when a body of mass m is taken up from a height h1 to height h2 above the ground, where h2 is greater than h1, in that case there will be gain in potential energy. मतलब एक lesser height से more height तक उठा के लेके जाएंगे, so there will be a gain in potential energy which will be equal to mg into h2 minus h1. And but if a body of mass m falls down from the height h1 to height h2, ठीक है, तो h1 से h2 पे fall कर रहा है, तो h2 is less than h1, right? The loss in potential energy is initial potential energy minus final potential energy, which is equal to mg h1 minus h2. Now kinetic energy, the energy possessed by virtue of its state of motion is called the kinetic energy. इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल के. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोशन के वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कुछ स्पीड होगा और उसके स्पीड को हम लोग अगर v मानते हैं, मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के वजह से जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. A fast moving stone has the capacity of breaking a window pane on striking it, and thus it has a greater kinetic energy. So fast moving stone है, right? वो इसको break कर सकता है, so it will have the greater kinetic energy.
नाउ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ mv स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. So expression for kinetic energy K is equal to half mv square. So kinetic energy possessed by a moving body is equal to the amount of work which the moving body can perform before coming to rest. Kinetic energy is calculated by amount of work done by an opposing force to stop the body. So work done by the retarding force in stopping it. So kinetic energy is retarding force into displacement F into S. Ma, let initial velocity be v, final is 0. So and the since A is retardation, so in that case v square is equal to u square plus 2as, or v0 is v square minus 2as, and displacement s is v square by 2a. Now from 1, 2 and 3, kinetic energy k is equal to force into displacement, mass into acceleration. Force कर लिया, displacement को v square by 2a कर लिया. A कैंसिल हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी. So relationship between kinetic energy and momentum. So kinetic energy K is equal to half mv square, momentum P is equal to mv. अब हम लोग को इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है. आप क्या करो, इसको m से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लोगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m, दैट इज p स्क्वायर बाई 2m. सो k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m और p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के. क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m है और p इज इक्वल टू रूट 2m के है. अब वर्क एनर्जी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन 10th, जब हम लोग 11th क्लास में कर रहे होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर 11th में भी है, वहां करेंगे तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है. So according to work energy theorem, the work done by the force on moving body is equal to increase in its kinetic energy. So force is equal to mass into displacement, mass into acceleration. So W is equal to F into S. So that is V square is equal to U square plus 2AS. Displacement V square minus U square by 2A first, और force is equal to MA. ठीक है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं. अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, राइट. सो यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू है m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया, राइट. ए और ए कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. सो ये वर्क डन क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. So work done by a body is equal to change in kinetic energy. So this is work energy theorem and it is very important a concept in terms of numericals. जहाँ v final velocity और u initial velocity. So work done is final kinetic energy minus initial kinetic energy. Work done is equal to increase in kinetic energy. ठीक है. Now forms of kinetic energy, there are these three forms of kinetic energy. One is
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अदर इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर, ये रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन वाइब्रेशनल मोशन, तब उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ना। सो सबसे पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ is called translational motion, and the kinetic energy of the body due to motion in a straight line path is called translational kinetic energy. Example है car moving in a straight path, and दूसरा है freely falling body. दूसरा rotational kinetic energy. So if a body rotates about an axis, the motion is called the rotational motion, and the kinetic energy of the body due to rotational motion is called rotational kinetic energy, or simply the rotational energy. Example is a spinning top, a rotating wheel having the rotational kinetic energy. तीसरा है vibrational kinetic energy. Now, so if a body moves to and fro about its mean position, the motion is called vibrational motion. The kinetic energy of the body due to its vibrational motion is called vibrational kinetic energy, or simply the vibrational energy. Examples: a wire clamped at both the ends when struck in the middle. तो मान लो एक वायर को हम लोग स्ट्रेच करके रखे हैं और यहाँ पे हम लोग इसको मूव करके छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं, तो उस पर एक वाइब्रेशनल एनर्जी आता है, मतलब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसको हम लोग, वो जो एनर्जी वहां पे पोजेस्ड है उस वायर के अंदर, उसको हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. So wire clamped at both the ends when stuck in the middle vibrates. The energy possessed by the wire in is the vibrational kinetic energy. Now depending on its state of motion, so depending upon its state of motion, a moving body may possess either one or more than one form of kinetic energy simultaneously. For example, a rolling body and the wheel of a running vehicle have both translational and rotational kinetic energy simultaneously. Now, distinction between potential energy and kinetic energy. So, सबसे पहला potential energy. So potential energy, it is the energy possessed by a body due to its change position or configuration. Kinetic energy is possessed by a body due to its state of motion. Now potential energy, it is equal to the work done in bringing the body in. It is equal to the work done in bringing the body its change state. So एक बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू द वर्क दैट अ मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट. Potential energy, it can change only in the form of kinetic energy, and kinetic energy it can change into any other form. Potential energy does not depend on the speed of the body. Kinetic energy, it does not, it depends on the speed of the body. अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. अच्छा तुम लोग के ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे.